पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले, काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज जंग के नाम। मशहूर और मारूफ ब्रिटिश ऑथर जॉर्ज ऑवेल ने बैनुल अक़वामी स्पोर्ट्स के बारे में कहा था कि इट इज वॉर माइनस द शूटिंग। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली जंग है, मगर उसमें ठाठू नहीं होती। आज भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। चंद ही घंटों बाद इंडिया पाकिस्तान का सामना करेगा 8वें अपने वर्ल्ड कप के ऐसे फेस ऑफ में। इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया की क्रिकेट टीम स्ट्रांग है, इंडिया की इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, इंडिया की पॉलिटिक्स स्ट्रांग है, इंडिया की फौज स्ट्रांग है, स्ट्रांगर देन एवर। ये एक हकीकत है। मगर पाकिस्तान की कम से कम क्रिकेटिंग साइड अभी तक वही रेपुटेशन रखती है जो वो दहाइयों से रखती आ रही है कि ऑन इट्स डे पाकिस्तान कैन टेक आउट, डिस्ट्रॉय एनी अदर क्रिकेटिंग साइड इन द वर्ल्ड। ये मर्क्यूरियल जो एक लफ्ज है कहते हैं, जिससे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को किसी भी दिन पे। आज ये ऐसी ही टीम मैदान में उतरेगी। मैदान क्या है? अहमदाबाद, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। 1,32,000 की इसकी सीटिंग कैपेसिटी है। स्टेडियम का नाम द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये होम टाउन है, का ये पॉलिटिकल कैपिटल है। इधर से इनकी सियासत शुरू होती है, तो एक सियासी एस्पेक्ट भी है इस स्टेडियम का। इस स्टेडियम की एक अजीब सी मैं आपको बात बताऊं। इस स्टेडियम में जो पहला मैच हुआ था वो क्रिकेट मैच नहीं था। इस स्टेडियम में जो पहला इवेंट हुआ था वो 2020 में, जब सदर डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से मिलने आए थे, तो इधर उनका इस्तकबाल हुआ था, उनके लिए इवेंट हुआ था। तो आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये वेन्यू चूज करना, क्योंकि बीसीसीआई को बीजेपी वाले ही चलाते हैं। जय शाह जो हैं वो अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह जो हैं वो नंबर 2 हैं नरेंद्र मोदी के। तो इधर पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया का मैच करवाना और फिर फाइनल भी इधर करवाना एक सियासी मूव है। सियासत का डेफिनेटली एस्पेक्ट है। इसको एक मिनी इलेक्शन कैंपेन कहा जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी शोकेस करेंगे इंडिया की, जिसे आजकल लोग भारत कहते हैं, भारत की माइट को। इसलिए इधर जो गहमा गहमी है वो अरूज पे है, मगर मसले भी हैं अहमदाबाद में और गुजरात में। ये वही अहमदाबाद है जिसके साथ गोधरा लगता है। ये वही गोधरा है जिधर 2001 में हजारों मुसलमानों को शहीद किया गया था। कम्युनल टेंशन इस इलाके में बहुत हैं, ठीक ठाक हैं, मगर सिक्योरिटी टाइट है। कम से कम 7,000 पुलिस वाले हैं, 9 बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स आज यूज हो रहे हैं, इवन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस सब में जो कम्युनल टेंशन, मतलब मुसलमान बमुकाबला हिंदू, इसको अगर हम साइड पे रखें तो एक और मसला है। मसला ये है कि गुजरात का ये जो स्टेडियम है, गुजरात क्रिकेटिंग हब नहीं है। कुछ ज्यादा क्रिकेटर्स गुजरात से नहीं निकले, और इधर जो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है वो भी इंडिया के फेवर में इतनी नहीं है। इंडिया ने इधर 1 T20 जीता है, 1 वनडे हारा है, और 1 टेस्ट मैच ड्रॉ किया है पाकिस्तान के खिलाफ। मगर इंडियन फैंस कहते हैं कि भाई ये जो स्टेडियम है ये हमारे लिए बड़ा गुड लक है। 87 में सुनील गावस्कर ने इधर 10,000 अपने जो रन थे मुकम्मल किए थे, हाईएस्ट टेस्ट स्कोरिंग बैट्समैन बन गए थे। 7 साल बाद कपिल देव ने रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड इधर तोड़ा था, अपनी 432वीं विकेट उन्होंने इधर से ली थी। और 2013 में द वन एंड ओनली, द मास्टर ब्लास्टर, द लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने इधर 30,000 रन बनाए थे, इंटरनेशनल रिकॉर्ड सेट किया था। तो रिकॉर्ड बनते हैं। परफॉर्मेंस गाइड, इंडिया के पिछले 5 जो मैच हैं उसमें विन विन लॉस विन विन। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस गाइड, विन विन लॉस विन विन। एग्जैक्टली द सेम परफॉर्मेंस बट वेरी डिफरेंट टीम्स। हम कवर कैसे कर रहे हैं अगले चंद मिनटों में। एक इंडिया का एक्सपर्ट, इंडिया का लीडिंग एक्सपर्ट, और पाकिस्तान का एक जबरदस्त क्रिकेट एक्सपर्ट जो
हर किस्म के हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं अगले चंद मिनटों में. ये जो आज की सुबह है, दोपहर है जो आपकी, यू हैव टू वॉच दिस बिकॉज इसमें हमने पॉलिटिक्स डिस्कस की है जो लेटेस्ट है, पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ जो हुआ है, जो थोड़ी सी सियासत खेली है बीसीसीआई ने, प्लेयर बाय प्लेयर परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, हाल ही में जो हुआ है एशिया कप में जो आखिरी जो इन दोनों का टाकरा हुआ था, बट वेरी इंपॉर्टेंटली जो एक्स फैक्टर है, वो फैक्टर जो डिसाइड करता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से, वो भी हम डिस्कस करते हैं. अ लीडिंग क्रिकेट एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया ऑन इंडिया, अ लीडिंग क्रिकेट एनालिस्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम न्यूयॉर्क अबाउट पाकिस्तान, एंड ऑफ कोर्स योर्स ट्रूली. जबरदस्त शो है. मे द बेस्ट टीम विन फॉर श्योर. मगर आज आपको नजर आ रहा है कि मैं किस साइड पे हूं. क्लियरली पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगाऊंगा, मगर फिर भी मैं कहूंगा मे द बेस्ट क्रिकेटिंग साइड विन. मेरा साथ दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. जबरदस्त मैंने इंटरव्यू किया, आज सुबह ही किया, विद जेमी ऑल्टर एंड ज़रार सईद. उनको देखना ना भूलें, उनको भी सब्सक्राइब करें. उनके भी लिंक्स हैं, मेरे भी लिंक्स हैं in the description. Don't forget to support independent journalism. Don't forget to share, like, subscribe, and comment, and enjoy what can only be called the game. Okay, तो मरहला बहुत बड़ा हो गया है. इसके अलग अलग लोगों ने नाम रखे हैं, मगर इसका मेरे हिसाब से अब एक ही नाम है. It can only be called the game. और गेम अकेला नहीं खेला जा सकता, गेम अकेला नहीं असेस किया जा सकता. और असेस करने के लिए मेरे साथ आज दो खास मेहमान फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम ईच अदर. पहले तो ऑफ कोर्स acclaimed author, New Yorker, master chef, always right hand, medium fast. समझते हैं कि ये फास्ट बॉलर है मगर नहीं है. My very own master blaster, ज़रार सईद, and of course the one, the only cricket journalist, analyst, author, actor, anchor, chat show host, YouTuber, probably the best looking fan one can see in an Indian jersey, Jamie Alter. Assalamu alaikum, dhanyawad, good evening, good morning, how is everyone? What's happening, boys? Kya haal hai? Yeah. Badhiya, tip top. Good to be here, guys. Good to be here. Really looking forward to this. Thank you for being here, Jamie. I know it's late over there. आप मुंबई में हैं, दिल्ली में, किधर हैं आप? Delhi, technically. Noida hai, but sometimes when I get embarrassed, I say, हाँ, Delhi है. Noida is like an extension of Delhi. It's like a suburb. हालांकि दूसरे state में है, UP में है, but to keep it easier for people who don't know, I just say Delhi. अच्छा, आपने तो इंडिया की जर्सी पहनी हुई है, ज़रार सईद. तुम्हें क्या मसला है? पाकिस्तान की जर्सी क्यों नहीं पहन के आए? यार इसके नीचे पहनी हुई है, सर्दी बहुत है. Good save. I hope it's a jersey and not some other sort of green undergarment. Okay, moving on. I need to know this very, very basically. ठीक है, tell it to me like I'm a 5-year-old. जैसे मुझे कुछ नहीं पता. कल क्या होने वाला है? Jamie, floor is yours. Okay, I'll give you a very, very honest answer because I assume that's what you like to hear. अगर ये सवाल आप मुझसे पूछते 3 हफ्ते पहले, तो मेरा जवाब कुछ और होता. बट अगेन बहुत आपके व्यूअर्स थोड़े खफा होंगे जो मैं बोलने वाला हूं. जो पाकिस्तान टीम अगेन मेरे हिसाब से एशिया कप में उतरी थी, वो उस टूर्नामेंट के फेवरेट्स थे. बट दैट सेकंड मैच, वी ऑल नो के पहला मैच जो पाले किले में हुआ था वो वॉश आउट हुआ था. दूसरे मैच में जिस तरीके से खासकर दूसरे दिन पर विराट कोहली और केएल राहुल ने वो पार्टनरशिप लगाई थी, इट वाज 200 प्लस. उसके बाद से अगेन दिस इज जस्ट इस नाचीज के राय में जो पाकिस्तान टीम के धागे खुल गए. दे डू नॉट टू माय माइंड लुक लाइक द सेम पाकिस्तान टीम. और यहां मैं सिर्फ नसीम शाह की गैर हाजिरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. समथिंग जस्ट इन माय व्यू, समथिंग चेंज इन दैट पाकिस्तान टीम. Yes, they're 2-0 right now in this World Cup, but they don't, to my mind, possess the same level of threat they possessed heading into the Asia Cup. और खासकर उस पहले पले के लिए मैच में when they had India on the mat at what was it 66 for 4. That's my reaction. I'm not by any stretch saying कि मैच जो है वो one-sided होगा, but personally the tables have somewhat been flipped because India then और उस जीत के बाद India found some long lost momentum. वो जाके एशिया कप जीत के आए, फाइनल में श्रीलंका को क्या 50 पे ऑल आउट किया.
उसके बाद yes they beat a second string Australian side, पर October 8th को उन्होंने जो जीत दर्ज करी ऑस्ट्रेलिया के साथ on a turning track, I believe the momentum is fully with India. A month ago I would have said 60-40, but something tells me, and I'm not even getting the fact कि वहां पे 1,20,000 लोग होंगे, वो सारे इंडियन फैंस होंगे. I think this Pakistan team will not even, they'll absorb that pressure. बात वो नहीं है. मैं बस man to man SWOT analysis करके my expectations of the Pakistan team have come down in the last 3 odd weeks. ठीक है, okay, fair. I'm going to try to punch a couple of holes in that, but hold that thought. Zarar Saeed, floor is yours. क्या होना है? नहीं, बिल्कुल जम्मू सही कह रहा है. लाइक एक चीज इसने सही बात की है कि जो 2-3 हफ्ते पहले वाली जो टीम उतरी थी और जो अब जो टीम उतरी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ फुटबॉल की. अगर आप लोग फुटबॉल देखते हैं तो 2014 में जब ब्राजील का वो नेमार जो इंजर हो गया था, तो उसमें हुआ क्या था कि वो पूरा जो उसका बैलेंस था टीम का वो आउट हो गया था. और जब वो सेमीफाइनल में उतरे थे तो उनकी फॉर्मेशन खराब हो गई थी और बीच में से बहुत होल्स थे और जर्मनी ने उनको 7-1 मारा था. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो टीम का बैलेंस होता है ना, स्पेशली बॉलिंग यूनिट का, वो अगर थोड़ा सा भी इक्का दुक्का आउट हो जाए ना, अगर आपका एक प्लेयर भी इंजर हो और एक आउट, वो पूरा बैलेंस खराब हो जाता है. तो पाकिस्तान, आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, लेकिन पाकिस्तान का जो बैलेंस है वो आउट हो गया. दूसरा ये कि they're carrying too many people that may or may not be in the best of form. ये दो चीजें हैं. लाइक ये तो जेमी सही कह रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अभी एक बहुत अच्छा मैच जीता. उसको कॉन्फिडेंस मिल गया. जो मिडिल ऑर्डर जो पहले कच्चा था उनका, वो अब जो है वो उनको कॉन्फिडेंस मिल गया कि हम 350 चेस कर सकते हैं. अगेन I would, if you were to put it to me, like, you know, I would still say कि अभी पाकिस्तान इंडिया का 50-50 है. उसकी वजह ये है कि इंडिया पाकिस्तान गेम में कुछ भी हो सकता है. और आपको पता है कि पाकिस्तान टीम जब उतरती है तो उसको खुद नहीं पता होता है कि उसने क्या करना है. और उसका मैच इंडिया से नहीं होता, उसका मैच उसके साथ ही होता है. ठीक है, अगर पहले 2-3 ओवरों में अगर शाहीन विकेट ले जाता है, उसके बाद बाकी बॉयज जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो भी इन फॉर्म हो जाते हैं. जो कैचेस ड्रॉप हो रहे होते हैं वो पकड़ लेते हैं, रन आउट्स ऐसे कर जाते हैं कि खुद उनको समझ नहीं आती. तो दैट्स व्हाट आई वुड से. ओके, सो प्रेमिस्ड ऑन दैट, तुम दोनों कन्वर्ज कर रहे हो. तुम दोनों कह रहे हो कि पाकिस्तान इज कमिंग इन एज द वीकर साइड. जेमी, एज यू सेड, धागे जो हैं वो खुल गए हैं टीम के. That's an interesting choice of words, because ये जो धागे खोलने में मैं थोड़ा सा ब्लेम करूंगा एशिया कप को. साथ साथ जिस तरीके से, I'm sorry but I need someone like you to weigh in कि इंडिया की जो पाकिस्तान में ना खेलने की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान की टीम को, I guess you can say, I'm going to use a very neutral word, atrophy करने की पॉलिसी है. टीम टायर आउट हुई लाहौर श्रीलंका, वो फ्लाइट्स थी. बाबर आजम वेंट ऑन द रिकॉर्ड, कहता है कि हम थक गए हैं. राइट, दैट वाज अ बिग साइकोलॉजिकल गिव इन अ स्टेट ऑफ वॉर, व्हिच इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच रियली इज. आप नहीं कहते कि मैं थक गया हूं. आप दूसरे बंदे से जब खेलने जा रहे होते हैं, आप 24 घंटे पहले प्रेस को ये नहीं बताते कि we're all tired. That started reflecting in the injuries. फिर वो रिजर्व डे वाला, तुम लोगों को तो बैटिंग प्रैक्टिस मिल रही थी. पहले मैच में फारिग कर दिया, दूसरे मैच में यू गाइज वर रेडी. 5 दिन तुम लोगों ने जाके इन स्विंगर की प्रैक्टिस मारी है. फिर तुम लोगों ने जो हाल किया वो सामने है. आई वांट यू टू वे इन ऑन दैट एज वेल एज द करंट थिंग. वीजाज नहीं मिले जर्नलिस्ट को, वीजाज नहीं मिले फैंस को. 1,20,000 लोगों के सामने पाकिस्तान के बस 11 लड़के होंगे. It's unbelievable what the BCCI has done. Weigh in on those dynamics for me, please. Yeah, look, I mean, obviously it's not a straightforward answer. यहाँ बहुत decades की political tensions हैं, geopolitical tensions हैं, and it's very obvious to anyone watching the stream कि जो BCCI है वो not just Indian cricket, वो विश्व के cricket चलाती है. The ICC has often been called a pawn in the hands of the BCCI, more so in the past few years. And look, I don't think anyone is actually going to come out and deny that, right? It was very obvious कि Indian team कभी भी किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएगी. Asia Cups and Champions trophies can go on. Unfortunately, this is going to sound harsh. They can go on
without Pakistan, but such is the global cricket climate and the global cricket market कि कोई भी बड़ा टूर्नामेंट जो है वो इंडियन टीम के बगैर नहीं चलेगी. It's unfortunate that we've reached that situation, but that is the situation. अब जब ये हाइब्रिड मॉडल जो नजम सेठी साहब उस समय पीसीबी के चेयरमैन थे, जब उन्होंने ये सजेस्ट किया था, तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया. आई वाज कॉल्ड ऑन मेनी शोज कि क्या ये पाकिस्तान की जीत है, क्या ये पाकिस्तान की हार है. आई सेड लुक, it's an unfortunate situation, but Asia Cup needs Pakistan. The World Cup needs Pakistan. So I'm not going to go and call it a jeet or a har. The fact that the Asia Cup is going on, yes, it's unfortunate कि श्रीलंका में वो हुआ था. Like you mentioned, travel is a real pain, and also Sri Lanka, if you know, end of September में बारिश होती है, और कितने मैच बारिश से इम्पैक्ट हुए थे. I think लगभग एक को छोड़ के सारे हुए थे. So it's an unfortunate premise on which the tournament was held, but it's something which we can go on and on. We can do separate shows. It was never going to change. India is the big brother, the big boss, the big bully. आप उसको जो भी कहो, it is and unfortunately for me, the biggest takeaway from this, from a negative connotation is, और ये बहुत shows में कह चुका हूं मैं, the same fans on which the BCCI thrives, the same fan, it claims India drives the global cricket economy. It has the biggest fan, जो कि सच्चाई है. लेकिन जब वो उन फैंस को रिगार्ड ही नहीं करती है when it comes to traveling, to tickets, despite being the richest board, we have so many substandard grounds here. And when they leave the scheduling for the World Cup for very obvious reasons, कोई भी वर्ल्ड कप हो, उसको 12-15 महीने पहले स्केड्यूल मिल जाता है, ताकि जो बाहर के लोग हों, जिनको वीजा चाहिए, जिनको ऑफिस से छुट्टियां मांगनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हैं. I was 18 years old and 17 years old in 98. A year before the 99 World Cup, I was able to walk into one of these bookshops in London and buy tickets a year in advance. एक वो जमाना था, एक इस साल है, आपने मात्र 6 हफ्ते छोड़े हैं, right? So I termed it a national disaster, the build up to this World Cup. Throwing in the politics, throwing in the anti-Pakistan stand, but it's not about the Asia Cup. It's about a World Cup, right? Which brings me to your question. पाकिस्तान फैंस को वीजा नहीं मिलेंगे, ये अफसोस की बात है, पर ये हकीकत है. द गुड न्यूज इज कि कल रात को 14 पाकिस्तान जर्नलिस्ट को वीजा मिल गया है. इसमें से आपके बीबीसी उर्दू वाले हैं, a lot of people who I've covered past World Cups with, but you can say कि यार 14 जर्नलिस्ट क्या होते हैं? It's 14 more than we were looking possible 24 घंटे पहले, but it's still 14. We can, like I said, it's a shame that this is what it is. No tournament can claim to be a global tournament without equal representation of media and fans, क्योंकि media और fans यही तो pulse हैं. Players अपना कमाल करते हैं field पर, but if you don't have a sizable media contingent, if you don't have sizable fans, it's never going to wholly, in my opinion, be a global tournament. That's what it is. It's unfortunate, but we all know कि उसके बगैर कोई और दूसरा ऑप्शन था ही नहीं. I think it is that. Zirar, before you launch into that, Zirar, I also want you to weigh in. I've been saying this. I'm sorry, मैं थोड़ा सा उस दिन hardcore हो गया था, but I think I said it. Pakistan should pull out. Pakistan should beat Sri Lanka and pull out and go home and make a precedent and take a stand. Because बहुत हो गया. 1,20,000 इंडियन फैंस के सामने 11 लड़के एक तरफ, 0 मीडिया. चलो शुक्र है, जेमी ने बताया 14 मीडिया के लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से. But a lot of people didn't like what I said. A lot of people did like what I said. It was a very, very, you can say, controversial take. Do you have a take on that? Should Pakistan have taken a stand, a harder stand? Pakistan's playing too nice with India as on the sidelines. What do you make of that? देखो, आप स्टैंड आप उससे लो ना कि जिसका आपको फायदा हो, ठीक है. दूसरी ये बात है कि लेट्स टेक इट बैक अ स्टेप, राइट. इंडिया ने तो चलो हमारे साथ जो किया, हमने जो अपने साथ किया, लाइक आपके अपने जो पीसीबी के 14 चेयरमैन आ चुके हैं इन द लास्ट year and a half. उसमें ये होता है कि आपकी ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है. दूसरा ये कि यार these guys are professionals, right? Like you are a professional, I'm a professional. अब मेरा काम पे अगर कोई मीटिंग है तो मैं ये नहीं कहूँगा यार मुझे वो जगह नहीं पसंद तो मैंने वहाँ नहीं खेलना. These guys are professionals. If you ask them, they want to play wherever they have to, right? दूसरा ये यार इन्होंने इनके अपने साथ क्या किया? शाहीन को सारे मैच इन्होंने खिलाए हैं. 100 भी वो खेला है और नसीम सारे मैच खेला है, टेस्ट मैच भी खेला है.
एक साल से कह रहा है कि यार मेरा शोल्डर खराब है, उसको खिलाई जा रहे हैं। अभी शुक्र करो युगांडा की टीम नहीं आई, नहीं तो उनके साथ इन्होंने 5 वनडे खिला देने थे इनको। तो इनके ये जो स्टांस है कि सारे प्लेयरों को खिला के पागल करती है। दूसरा, अब देखो शाहीन का जो फिंगर इंजरी हुई है, तभी तो उसकी 90 पे वो कराता था, अब वो 82-83 पे करा रहा है। सो दीज थिंग्स वी हैवंट डन आवरसेल्व्स एनी जस्टिस। हमारे अपने वहाँ पे मेडिकल स्टाफ, आई डोंट इवन नो कि वो इतने क्वालिफाइड हैं कि इनको वो हैंडल कर सकें। तो आई डोंट थिंक वी शुड मेक एक्सक्यूजेस। ठीक है जो है सो है, लाइक दिस इज इट। या वी ऑल वांट कि वहाँ पे हमारे लोग भी जाएं, नारे शारे लगे, आलू टिंडे गाजर प्याज वहाब रियाज, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। लाइक हम चाहते हैं कि इस तरह के हमारे भी वहाँ पे लोग जाएं। लेकिन देखो इंडियन फैंस ने देखो कैसे उनको अप्रिशिएट किया, पूरा स्टेडियम उनके ऊपर नारे उनके लिए लगा रहा था। तो आई थिंक दे हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, टेक इट एज अ चैलेंज। तो ये चैलेंज है भाई, आप 1.5 लाख लोगों के सामने खेल रहे हो या एक बंदे के सामने खेल रहे हो। यू आर प्रोफेशनल, दे आर गोना गो आउट एंड डू द बेस्ट दे कैन। Okay, I'll take that. Solid answers. Okay, now I'm going to do a cross analysis. ठीक है जेमी, मैं तुमसे इंडियन टीम के बारे में नहीं पूछूंगा। I'm going to talk to you कि how do you take the Pakistani squad? कल का जो लाइनअप है अभी तक जो एक्सपेक्टेड है, स्पेशली जो चेंज अप्स हुए हैं बॉलिंग में, missing Naseem as you already said, but Haris is peaking. It's interesting. Also Abdullah Shafiq, dangerous new character in the mix. I'd like to know your perspective. And फिर ज़रार मैं तुझसे पूछूंगा कि तू हिंदुस्तानी टीम को कैसे देखता है। ठीक है जेमी, go for it. Look, so like I said, शो के शुरुआत में ये जो नसीम शाह का एब्सेंस है, राइट, आई गो बैक टू दैट पाले के लिए मैच जो वॉश आउट हुआ था। ठीक है, एक रेन ब्रेक हुआ था। चलिए, शाहीन ने गेम सेट एंड मैच, मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि भारतीय टीम को यहां से पैकअप करो। ठीक है, फैंटास्टिक। बट लुक एट द फर्स्ट स्पेल एंड द सेकंड स्पेल, रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल, ये नसीम शाह की गेंद पे दे एक्चुअली लुक्ड मोर अनकंफर्टेबल। नाउ शायद हो सके क्योंकि शाहीन शाह ऑलरेडी पहले आपके दागे खोल चुके हैं। 2021 जो T20 वर्ल्ड कप था, India should have won that tournament because it was a home tournament that was shipped to the UAE. It was still you're the home team. आपके पास 11 के 11, बल्कि आपके पास 16 खिलाड़ी थे जो सारे IPL खेलते हैं। But Shaheen's opening spell to India in what was it, October of 21? उसके बाद से कुछ, and India has a left arm problem. If Zarar bowl left arm, he'd also go and get a couple of wickets. India की इतनी घटिया सीन है against quality left arm pace, right? But the absence of Naseem, whether he's giving control, whether he's building pressure on the other batsmen, it's almost like Ashwin and Jadeja, they'll control and Kuldeep Yadav will reap the wickets. मेरे हिसाब से जितना भी मैंने इन दोनों को साथ में देखा है, हारिस पे आएंगे, Naseem's contribution in Shaheen getting up wickets was massive. So अचानक आपको वो control factor नहीं मिल रहा, okay? Again, Shaheen when he's brilliant is brilliant. When he's poor, he's very poor. He needs conditions. Sometimes he pitches the ball up and even half-assed batsmen can drive him down the ground. Ab, like Zarar mentioned, injury के चक्कर उसका जो threat है वो काफी कम हो गया, right? But to my mind, Pakistan still own the best first change pace bowler in the global game right now. वो है आपके हारिस रॉफ। अगर आप 12 ओवर या 10 ओवर on a bad day, अगर उसके बाद आके आप आग के गोले फेंक रहे हो, बारूद फेंक रहे हो 5 ओवर के लिए, you are a massive asset. But unfortunately, in the last match against Sri Lanka, he had a terrible match. He was being pulled. एक pull shot मारा कुशल मेंडिस ने, और जनाब इनकी शक्ल देखने लायक थी। हारिस इज लाइक, इसने मेरे को लगाया। One bad match, but I don't think Haris is coming into the kind of form he was had he been playing in the Asia Cup, which goes back to my earlier point. Haris is Haris, but sometimes we all know these players, they feed off के पिछले match में क्या हुआ ना। It's like a movie. You're only as good as your last Friday release. And unfortunately, just one sample size, Haris का पिछला match इतना अच्छा नहीं हुआ था. Second thing is, against Pakistan team, and I need to stress, I think this whole match is going to be dictated on the 22-yard strip जिस पे कल का मैच खेला जाए. Let me tell you and the viewers, अगर हम नहीं जानते, ये जो revamped stadium है, इस पे 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं, केवल 2 टेस्ट मैच. In early 2021, in a day-night match, it was such a rank turner कि मैच शायद तीसरे दिन पे लंच ब्रेक से खत्म हो गया. India spinners took 18 of the 20 English wickets to fall. ठीक है. 2 years later, because India had suddenly lost a test match to Australia in this year's Border Gavaskar Trophy, that pitch रातों रात became a road. Such a road कि some 1200 रन बनाए गए थे और केवल मेरे ख्याल से 20-21 विकेट गिरे थे.
That's two examples. More recently, उस टेस्ट मैच के बाद, the Ahmedabad track in the IPL was full of runs. It was very easy to get 220, 250 and to chase 250. उसमें इतना bounce था कि आप खेल सकते हो. But there was still something for the Hardik Pandya type bowlers. अब Hardik Pandya is a decent bowler. But had this been that kind of wicket, it would have played entirely into Shaheen, Naseem had he been here, and Haris Rauf. लिख के लीजिए मेरे से, it's going to turn. Why is it going to turn? India brought back Ashwin after 18 months, and whatever wicket India wants, they're going to get that wicket. दूसरी बात, अभी शादाब खान का फॉर्म बहुत खराब है, और मोहम्मद नवाज is not a big turner. पाकिस्तान के पास वो तीसरा स्पिनर नहीं है. आजकल कोई शोएब मलिक नहीं है, कोई आफरीदी नहीं है. It's a very weak attack. ठीक है. ऊपर से, just like India, Pakistan also have a weakness playing spin. This track is going to play in. India will never risk the kind of tracks we saw about 6-7 times 6 months ago in the IPL. Not against Pakistan. If that backfires, धागे अपनी टीम के खोलने वाले हैं. It's going to be a turning track. It's a risk because India also struggle against spin, but they're going to take that risk. पिछले मैच में अफगानिस्तान के सामने मैं वहीं था मैदान में परसों. It was a flat track. अश्विन बाहर गया, शार्दुल आया. परसों के मैच में शार्दुल, कल के मैच में शार्दुल बाहर जाएंगे, अश्विन आएंगे, and they're going to bag on 30 overs of quality and very spin. This is why, coming back to the Pakistan question, पाकिस्तान को जबरदस्त बैटिंग करनी पड़ेगी. बेहतरीन बात है कि मोहम्मद रिजवान ने बढ़िया सेंचुरी मारी. आपने जिक्र किया असदुल्ला शफीक का. मैं 6 महीने से कह रहा हूं ये पाकिस्तान टीम अभी भी फकर जमान जैसे डड्डू को क्यों खिला रहे हैं. मानता हूं बड़े बड़े मैच, वो बड़े स्टेज के प्लेयर हैं. I will never forget his 100 against India in that championship run. This guy scored big runs. लेकिन आपने 14 पारियां से आपने 30 पार नहीं किया. To my mind, Fakhar Zaman had no business being in Pakistan's World Cup squad. He might be one of the names which Zara mentioned he shouldn't be around. That it took them so long to realize कि भाई इस बंदे से ना हो रहा है. Asadullah Shafiq coming in getting that 100, बेहतरीन timely knock है. Because suddenly Imam is not in form. But like I said, in your last match you can call on. I won't call him a new face क्योंकि वो काफी खेल चुके हैं. लेकिन बंदे ने वो किया जो इमाम और फकर जमान ने बहुत टाइम से नहीं किया, वो है क्वालिटी 100 मारना. सो पाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात है बाबर आजम को रन बनाने पड़ेंगे. बाबर इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन, नंबर 1, लेकिन इंडिया के सामने हिज रिकॉर्ड इज हॉरिबल. बाबर आजम को दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं बाबर आजम हूं. आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर बाबर द कैप्टन. आई थिंक ही हैज ब्रॉट a different level of stability to Pakistan teams. Love to hear Zara's view on this. And stability and Pakistan don't really go together. लेकिन जितना मैंने इनको देखा है बाबर के अंडर, the guy has done a fantastic. लेकिन his batting beyond Pakistan, outside Pakistan, requires a lot of work. So if Babar gets going, match में इंडिया के धागे खुल सकते हैं. That's my brief take on Pakistan's chances for the match. And it's high time Babar responds. बहुत हो गया. He's been pretty lame of late. Zarar Saeed, जरा इंडिया का तो एनालिसिस करें. I just want to just reply to Jimmy on quickly Pakistan. वो जो धागे खोलने वाली बात है ना, इंडिया right now जहाँ पे वो vulnerable थे ना, वो थे न्यू बॉल पे. अगर इंडिया के आप ओपनर्स और विराट कोहली को पहले 10 रनों के अंदर आउट ना करो तो वो बहुत लंबा स्कोर करेंगे. ये तो सबको पता है. ठीक है. अब वो नसीम शाह वाला एंगल एक और भी है कि न्यू बॉल कराना ये मामे का वेड़ा नहीं है. ठीक है. हर बंदा नहीं कर सकता. तो एक वो स्पेशलिस्ट न्यू बॉल बॉलर था, वो आपने उसका कोई हमारे पास बैकअप नहीं है. बैकअप हमारे पास है 4th स्ट्रिंग हसन अली. ठीक है. पहले हसनैन भी इंजर है, एहसानुल्लाह भी इंजर है, ये सारे इंजर्ड है बेचारे. लेकिन हसन अली को वापस लाना पड़ा क्योंकि ही कैन बॉल द न्यू बॉल. अब आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव उस पे होगा उन विकेटों के ऊपर, लेकिन ये होगी वो बात. इंडिया के ओपनर्स को आउट करना बहुत जरूरी है. कल आपने देख लिया कि रोहित शर्मा ने उनके साथ क्या हाल किया अफगानियों के साथ. वो तो ऐसे खेल रहा था जैसे पीछे अपने गार्डन में उसने गेट को चौका रखा हुआ है, क्यारी जो है वो छक्का है, और इस तरह का उसने सीन बनाया हुआ था. तो ये ऐसा सीन अगर बन गया कि पहले 5 ओवरों में आपने विकेट नहीं ली तो वो तो नहीं छोड़ेगा आपको. दूसरा, अगेन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अगर आपके पास 1 डाउन आ रहा है तो उसके बाद आप रह के गया. तो अगर ये 3 आउट नहीं होते तो इंडिया 350-400 खड़ा कर देगा इजिली. और दूसरा ये जैसे जिमी ने कहा कि हारिस रऊफ ठीक है वो थंडरबोल्ट्स फेंक रहा है, लेकिन अगर आप
वो थंडरबोल्ट्स एक जगह से फेंक रहे दूसरी साइड से वो चौके खा रहा है शादाब, तो फायदा क्या हुआ? यू हैव टू हैव समवन के दूसरी साइड से कम कंट्रोल रखे ना. अब शादाब बॉल्स 2 बैड बॉल्स एंड ओवर, उसके हाथ से वो बॉल निकल ही नहीं रही. और जितनी अगर श्रीलंका में उसकी स्पिन नहीं हो रही बॉल, तो यहाँ क्या स्पिन होनी है? यू नो व्हाट आई मीन. दूसरा बात जेमी ने पूछा कि बाबर आजम ने स्टेबिलिटी लाया. ऑफ कोर्स मैन, जब ये बनता, ये एक लीडर बनाया आपको मिला है, हर बंदा इस पे तनकीद करता है, लेकिन इसने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है यार. इतनी गंदी टीम, दिस इज द बेस्ट टीम वी हैव हैड इन अ वर्ल्ड कप सिंस 99. कोई इस पे आर्ग्यू वाली बात ही नहीं है. लाइक और इसको बनाने वाला भी ये है, इसको स्टेबल रखा है इन्होंने. 4 साल इसको कप्तानी दी है, 3.5-4 साल. पाकिस्तान में यार रेलवे कंडक्टर 3 हफ्ते नहीं रहता, तो ये तो कप्तान रह गया इतने साल. तो ठीक है, वहां पे SHO बदल हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो ये तो बेचारा, इट्स अ मिरेकल कि इतने साल ये रह गया, यू नो. तो दैट्स व्हाट आई मीन. लाइक वो जो स्टेबिलिटी ये लेके आया है. दूसरा, ही इज बैक्ड हिज प्लेयर्स. अब नवाज जो है ना, वो स्पिन कर सकता है बॉल, ना उसकी बॉल सीधी आती है, लेकिन he's been backed by Babar. Babar says that this is my guy, so what are you going to do? अब इसने एक मैच इंडिया वाला जिताया था, you know. उसके बाद इंडिया एक मैच इसने हराया भी था, लेकिन इसने उसको कहा था कि तू मेरा ही बंदा है, तू मेरा मैच विनर है. वो जो उसकी निकली थी वीडियो, तो ये अपने प्लेयर्स को बैक करता है. दैट्स द बिगेस्ट क्वालिटी इन एनी काइंड ऑफ लीडर. जैसे इमरान खान वो क्या कहते हैं, इंजमाम उल हक उल्टियां कर रहा था, उसने कहा नहीं, तूने मैच जिताना है मुझे, और उसने मैच जिताया था. You know, this is the quality you need in a leader. इंडिया की बात अगर करें तो मेरे ख्याल है उनकी बैटिंग तो अच्छी है ही है, लेकिन आई थिंक जो बॉलिंग है ना उनकी, वो इट्स probably the best in this World Cup at this time. It can, I mean, उनके like spinners अपनी जगह, हार्दिक पांड्या like पूरा बैलेंस रख, तो उस टीम के बैलेंस की हमने बात की थी. पांड्या जो है वो बैलेंस लेके आता है इस बॉलिंग लाइनअप में. Okay, all right. I agree. The Indian bowlers have this lineup. मैंने नहीं देखा, मैं expect नहीं कर रहा था. एक as a Pakistani and as a casual observer of the game, एक urban legend है कि इंडिया बैट्समैन तो निकाल लेता है, bowling शोलिंग इंडियंस को नहीं आती. That myth has been shattered, not just in this World Cup, even in the Asia Cup we saw it. But let's start wrapping things up, boys. X factor line, X factor होता है. अब एक्स फैक्टर कंडीशन होती है, एक्स फैक्टर एक लास्ट मिनट स्पीच होती है, एक्स फैक्टर 1,20,000 हिंदुस्तानी होता है और आप अकेले 11 लड़के होते हैं. अब वो फाइट या फ्लाइट वाला होता है. जेमी, एक्स फैक्टर ये है कि बाबर आजम को सुबह ख्वाब आ जाए, कोई चाचा आ जाए उसका कि कहे बेटा कि तूने खेलना ही है आज, कुछ भी हो सकता है. सो आर देयर एनी एक्स फैक्टर्स यू आर बेटिंग ऑन, जेमी एंड ज़रार? जेमी, you first. From the Pakistan team, look, I know. Okay, let me start with the Pakistan team. मानता हूं कि बंदे का फॉर्म बहुत ऊपर नीचे है, but what Shadab Khan does to this Pakistan team, because I'm going to use a cliche, he's a mercurial player, right? एक मैच हुआ था एशिया कप से पहले, आपकी टीम गई थी श्रीलंका, 3 मैच की सीरीज थी अफगानिस्तान के साथ, राइट? पहले मैच में आई थिंक they bowled Afghanistan out for like 59 or 60 or something. जो दूसरा मैच था हेम्बन टोटा में, शायद वो बहुत करीबी मामला था. उसमें चेसिंग 300, little over 300, उसमें इमाम got 91, बाबर got a 50, and there were a couple other contributions. उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? शादाब खान ने 35 गेंदों में मेरे ख्याल से 48 या 49 मारा है, राइट? दैट टू मी अंडरलाइंस कि ये बंदा कितना डेंजरस है. जिस मैच में इन योर कोर स्किल दैट इज बॉलिंग लेग स्पिन आप फेल हो गए, आई डोंट थिंक ही गॉट अ विकेट, लेकिन आप मैन ऑफ द मैच बने उन 2 खिलाड़ियों से आगे जिसने 90 बनाए और जिसने कुछ पता नहीं 60 के आसपास बनाए. दैट इज द डेंजर दैट शादाब खान ब्रिंग्स. ज़रा ने कहा था कि उसकी गेंद वहां नहीं घूम रही है तो यहाँ क्या घूमेगी, पर इफ लाइक आई सेड शो के बीच अगर वहां थोड़ी घूमती है ना, जस्ट बिकॉज ही सच अ डिफरेंट प्लेयर. खराब फॉर्म बहुत लोग से खेलते हैं, लेकिन एक होता है ना एबिलिटी टू जस्ट आउट ऑफ द ब्लू थ्रो दैट असाइड एंड बिकम अ न्यू प्लेयर. बेहतरीन फील्डर है, probably one of the, I don't know, Zara, you watch a lot of cricket, one of the better fielders and not the best in the Pakistan side. वो कुछ करता है, उसके चेहरे पे दिखता है, he is here to have fun, right? और बैटिंग की बात करें, if anyone is back in this team, I think it's Shadab, because despite, taking wickets against Nepal only and Netherlands, he still plays every single game. So I know he's probably unpopular choice,
इंडिया ने बहुत इसको सूता था उस मैच में. रोहित शर्मा ने उनके पहले ओवर में 18 रन मारे शायद. On his day, just because that guy like Afridi does something which very few people perhaps expect, I'm going to go with him. Had Naseem been here, I would have said Naseem, but right now batting नहीं चल रही है, bowling कुछ खास नहीं है, लेकिन शादाब के कुछ है. About India, I'm going to say Ashwin, because he's a player who I had a lot of issues with how he got back into this one-day World Cup, having played 4 one-days in 6 years. But it was a very calculated move based on conditions. He was outstanding in Chennai. He only got 1 wicket. He came on before Kuldeep and Jadeja. लेकिन उसके तीसरे और चौथी गेंद पे जो उसने स्टीव स्मिथ के यहाँ घुस के जो बम्बू मारा स्टीवन स्मिथ का, he didn't get his wicket, but Steven Smith was like, what the hell is going on here? If the track is similar, and I think it will be, I'm going to stick my neck out and say it's going to be somewhat like a Chennai track, उस बंदे के 10 over could be the difference. Because Pakistan can play Bumrah, they can play Siraj, I think they'll play Kuldeep. Babar might not play Kuldeep, but Ashwin, अगर Ashwin का दिन रहा ना, तो X factor हो सकता है वो, मेरे हिसाब से. Okay, good assessment. Zirar, X factor? X factor, यार, I agree with जम्मू के शदाबा जो है वो तीनों चीजें बहुत अच्छी करता है. फील्डर, I think he's the best in the world right now. Like he's amazing. Like वो जो जिस तरह के वो रन आउट करता है, जिस तरह का कैच वो पकड़ता है, उसमें जज्बा है. वो देखो एक्स फैक्टर वो वाला प्लेयर वो होता है जो टटों के साथ खेले, जो खसी ना पड़े. You know what I mean? तो हमारे पास जो है बहुत कम ऐसे प्लेयर आए हैं जो ये नहीं देखते कि अगला कौन है. मतलब है कि मतलब हमने जो है ना अंदर जाके तहस नहस में चाहते नहीं है. लाइक इस तरह के प्लेयर्स जो है मेरे ख्याल है सिर्फ हमारी टीम में 2 ही हैं. वो एक हारिस रऊफ है ऑब्वियसली, क्योंकि लाइक ही डजंट केयर कि अगला कौन मेरे सामने खड़ा है. मैंने तो पागल कर देना है इसको. और दूसरा मैं कहूंगा कि एक्स फैक्टर कल जो होगा ना वो होगा इफ्तिखार जो है, क्योंकि उसकी बॉल जो है जो वो स्पिन करा रहा है, वो शदाब और इससे डबल स्पिन करा रहा है. और वो मैच में लाइक जब वो छा जाता है मैच में, वो सारा पूरा पासा पलट देता है. और चाचू के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब वो प्लेयर है भाई वो, और आपकी पूरी टीम का वो बैकबोन है इस टाइम. एंड आई थिंक आई वुड गो विद हिम. इंडिया के लिए आई थिंक आई वुड डिसएग्री विद जिमी. आई थिंक कुलदीप जो है वो हिज बाबर के माइंड में होगा. जिस तरह वो आउट हुआ था पिछले वर्ल्ड कप में, उसके दिमाग में ये बात रहेगी. एंड बाबर इज वेरी अगर बाबर आउट होता है गंदी तरह तो वो स्पिन पे आउट होता है. वो फास्ट बॉलिंग पे मैंने नहीं उसको देखा गंदी तरह आउट होते हुए कभी भी. तो दैट्स व्हाट आई वुड पिक दीस 2 गाइस. ओके, चलते चलते आई एम गोना आस्क बोथ ऑफ यू कि कल मैच कैसे देख रहे हो, किधर देख रहे हो? जेमी, आर यू गोना बी देयर? आल्सो मतलब तू किसी आई नो इट्स इन योर ब्लड, मगर कोई फिल्म की हीरोइन को तो नहीं साथ ले जाएगा वापस दिल्ली? तो are you going for the game? How are you prepping for the game? नहीं, I for you and your viewers, I'll be very honest, जितने भी मैंने वर्ल्ड कप कवर किए 3 हो चुके हैं, ये 4था है मेरा. मैंने कभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं चुना. 2 सिंपल वजह से. एक तो मुझे वो मैच का लुत्फ उठाना है, मुझे उस मैच का आनंद, मुझे मनोरंजन लेना है उस मैच का. और दूसरी बात, बीइंग पार्ट ऑफ द मीडिया, जो दबाव एक रिपोर्टर पे आता है ना पाकिस्तान इंडिया मैच के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद अगर जो टीम हार जाती है, मुझे उससे नहीं झेलना है. तो आई बीन फॉर्चुनेट कि पिछले 3 वर्ल्ड कप में आई बीन इन पोजीशंस वेयर आई बीन अ स्पोर्ट्स एडिटर, आई बीन एबल टू डेप्यूटाइज समवन एल्स टू गो. मुझे इस मैच में काम नहीं करना है, मुझे इस मैच में एंजॉय करना है. आई वुड हैव गॉन दिस टाइम अराउंड ओनली बिकॉज इंडिया में है, लेकिन कम वक्त बीसीसीआई और आईसीसी ने इतना समय लगाया, इतना वक्त निकाला schedule रिलीज करने में कि by the time the day the tickets came out and the match accreditation, tickets from Delhi to Ahmedabad were 28,000 and hotels were like 60,000 rupees. Since then they've dropped back to 4 or 5,000, but at that time, because as a journalist you need to inform the ICC whether आप उस मैच के लिए जा रहे हो, और अगर आपने हाँ किया और आईसीसी ने आपको मैच पास दे दिया और आप नहीं गए किसी भी वजह से, तो वो आपके खिलाफ ब्लैक मार्क लग जाता है. So it was a very calculated decision to go to an India Pakistan match. But then when all the signs were stacked against him, मैंने कहा यार तू चिल कर, तू घर बैठे अपने 4-5 लाइव कर, शाम को पैक बना, मैच देख, एंजॉय कर. So I'm going to be doing that. क्या बात कर रहा है यार, क्या आदमी है. आधी बॉलीवुड की हीरोइनें होंगी उधर, क्या बात कर रहा है यार, किस किस्म का आदमी है. एनीवेज, अच्छा ज़रार सईद, आप मुझे बताएं, आप न्यूयॉर्क में किधर देख रहे हैं मैच? यार वो मैं तुम्हें भेजता हूँ जिसके बाद हम बेसिकली सुबह के टाइम है यार, 5 बजे 4:30-5 बजे उठ के जितने लोग इकट्ठे कर सकते हैं हम इकट्ठे करेंगे, चाय बनाएंगे, पराठे
ये वो। लेकिन यार आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी जम्मू, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार हमारे बॉयज को आईपीएल तो खिलाओ यार, क्या हो गया? मतलब कम से कम ये तो कोई किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब इमेजिन अगर बाबर, रिजवान, शाहीन और ये लोग बॉयज इधर खेल रहे हो, अगर आरसीबी में बाबर खेल रहा हो और मुंबई इंडियंस में अगर रिजवान कीपर बन जाए, यू नो लाइक मतलब क्या ही बात होगी, यू नो दैट्स द ओनली वे। आई थिंक उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है इंडिया में। इफ आई वाज अ बिजनेस पर्सन, राइट, एंड आई वुड थिंक कि यार अगर where would the largest eyeballs come from outside of India, and that would be a clear like you know bottom line for me कि यहाँ सबसे ज्यादा पैसा भी बन सकता है, ऊपर से आपकी ब्रांड बिल्डिंग भी हो सकती है। लाइक ये बाकी जो ब्रांड, अगर ये ब्रांड्स बनना चाहते हैं, अव्वल तो आई डोंट थिंक दैट उनका एजेंडा ये है, क्योंकि देखो ना, अगर आपने रियल मैड्रिड को देख लो या मैनचेस्टर यूनाइटेड या मैन सिटी, या ये इन लोगों ने ब्रांड्स बनाई हैं दुनिया में। आप अफ्रीका चले जाओ, वहां पे बच्चा यू नो मेसी की शर्ट पहन के फिर रहा है, यू नो इस तरह की चीजें। आपको एक ग्लोबल ब्रांड बनाना पड़ेगा। और मेरा ये इस टाइम में यही कहूंगा कि किसी तरह अपने बॉयज को कहो यार इनको खिलाएं और इनको डालें उसमें ऑक्शन में, और देख के नहीं करते क्या है। I want to second that, Jamie, before you get into that, and we'll wrap things up from there because I know you boys have to go. But Jamie, ये जो एक anti-Pakistaniyat एक तरफ, it's an election year in India. I'm going to make this a little political because that's what I do. I don't need you to weigh in on the politics, but you know, from the media, from the industrial side of the IPL, कोई कॉमन सेंस बॉटम लाइन टाइप लॉजिकल लोग नहीं है जो कह सकें कि सर आप वी अंडरस्टैंड यू आर द बीजेपी, आरएसएस एटसेट्रा एंड पाकिस्तान is a terrible country and we've been at war with them thousands of times, but this makes good business sense. As Zarar said, this makes good branding sense. In fact, it could be even bigger crowd puller than ever if there's Pakistani players in the IPL. Why is this soft ban? मैं तो कहता हूँ ये this is sort of a soft apartheid. ये अगर officially announce होता तो it could have been a legal problem for the BCCI. But it's a very soft ban and you're not really achieving much except like denying the greatest fans in the world, the Indian fans, this opportunity. Again, look, and you'd probably find आज के हालात में you probably would find 60-40 on this view, 60 for it, 40 against it for various obvious reasons. ये परसों की बात है, मैं दिल्ली के मैदान पे था और इसी टॉपिक को लेकर ऑलमोस्ट जुड़ी एक बात हुई थी, and I was not alarmed at the amount of people who were saying कि होना चाहिए and the amount of people who were saying नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है आजकल के हालात में, क्लाइमेट में आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हो, आपको अपनी व्यूज इजहार करने पड़ते हैं for better or worse. Going back to the Pakistan presence in the IPL, what 15 साल हो गए शायद. You remember, I mean, Sohail Tanveer, the fan following he was getting, I think एक ही साल या maximum एक ही साल खेला शायद Sohail Tanveer. I think he holds a record. He got some 7-0 in one match. He was playing for Shane Warne's team back then. The tournament. बताइए, there you go. Shoaib Akhtar, those images of Shah Rukh Khan lifting him up. Shah Rukh Khan with his perennial bad back, you know, picking him up, you know, at Eden Gardens. So the fan base is there, or business, but like to say, there is no argument. It is a fantastic business, and cricket is a business. लेकिन अफसोस की बात है कि business से ऊपर एक चीज होती है, वो है politics. Or politics will always trump business. Politics needs business. Business does not necessarily always need politics the other way around. But politics in this situation, and it's not about just this government. कांग्रेस के टाइम पे ये शुरू हुआ था, राइट? बीजेपी तो अब आई है, 7-8 साल हो गए, पहले 7-8 साल तो कांग्रेस का टाइम था. सो गोइंग आफ्टर वन पार्टी इज आल्सो अ सॉफ्ट थिंग. ये पहले भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, बट आई एम विलिंग टू बेट देयर आर काउंटलेस बिजनेसमैन who understand the value and the scope of bringing Pakistan players into it. Because automatically, like you said, आपका fan base इतना खुल जाता है, बाहर के पैसे आ सकते हैं. You got the Gulf everywhere you go, and there's a strong Pakistan presence. जाहिर सी बात है, Indian Pakistan fans यही तो बहुत सारे न्यूज चैनल्स चलाते हैं, ये बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ये बहुत सारे मशहूर क्रिकेट वेबसाइट्स चलाते हैं. When I was in Cricinfo from 2005 to 2010, the going was हमारा fan base इंडिया में नहीं है, हमारा fan base North America, because all the Indians, Pakistanis, Sri Lankans, Bangladeshis, the expat audience is the biggest financial mover, you know. But without getting into the politics, I know कि ये होगा नहीं, बहुत साल तक नहीं होगा ये. अच्छा, last taking bets, ठीक है. What's your breakdown for tomorrow, Jamie? 60-40, 50-50, 70-30? I'm going to stick with 60-40. I genuinely
दिल पे हाथ रख के आई डोंट थिंक वो 1,20,000 लोग are actually going to get into Pakistan's heads. I think they're made of sterner stuff. But क्या अभी उनके पास वो players हैं जो एक turning track, and I'm going to shake my neck out and say कि turning track होगा, क्या उनके पास वो players हैं जो 10 wicket निकाल सके? I have my doubt. So 60-40 to India. Zarar Said, what's your breakdown? You're the finance guru in New York City. बता. यार 50-50 है वाज में, like you know, as much as my heart says कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए, I don't think it like I said, it depends कि वो सुबह उठ के कौन सी साइड बिस्तर से उठेंगे, you know what I mean, what side of the bed they get out of, you know what I mean. तो उसमें अगर वो वाला पाकिस्तान आ गया जो कि किसी भी टीम को हरा सकता है, तो then unstoppable. अगर वो वाला पाकिस्तान आ गया जो you know एक दूसरे को गालियां दे रहा है, ओ क्या छड़ता, ओ यार रन आउट सी आ की कितना है, you know like वो वाला अगर पाकिस्तान आ गया ना, वो फिर प्रेशर के अंदर क्रम्बल भी कर सकता है जितना मर्जी वो स्ट्रांग हो. तो I would still go 50-50. Right, 50-50. Zarar Said, 60-40 in favor of India. Jamie Alter, I am 100-0 for Pakistan, because that's the sort of focus. That's the sort of focus you need to beat a team like India. If you don't go in with your guns blazing, there's no way you're going to get massacred in a crowd like that. Pakistan ka ek mental, psychological issue raha hai. There is that long-standing 0 versus nothing record in every World Cup. This has to be broken. It has to be broken. So, thank you. Jamie Alter from Noida. Zarar Said from New York City. बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखें दोनों. Pakistan Zindabad, Hindustan Paindabad. Thank you. May the best team win tomorrow, boys. May the best team win. Bye, boys. Thank you. Pleasure.